आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, चाहे चैट पे हैं या जो लाइव बैठे आपका पिछवाड़े में लगी हुई आपको बुझा रहे हैं, ये सब सिर्फ मस्का लगा रहे हैं। सच बताऊं तो डिबेट बहुत ही घटिया की है आपने, ठीक है। और एक दुश्मन जो कि आपको सच बताए, वो उस दोस्त से बेहतर है वो जो झूठ बोल के आपको जो है वो खुश करे। ये इसके अपने मेंबर ने कहा, और इसने फिर एट द एंड ये बोला कोई मसला नहीं, जहां पर हमने इतना सारा प्यार एक्सेप्ट किया है वहां पे हम लोग जो है वो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे छक्कू इंसान, तुम्हारा प्यार है कहाँ पे? वो जो 25-30 बंदे अकाउंट में बना बना के, गूगल की फेक आईडीज बना बना के जो इसने मैसेज किए हुए हैं, वैसे बोल आप लिया आपने, वैसे ही लोग इसी के अपने ही 4-5-6 थे जो कि इसकी तारीफ में इसके फूल बांध रहे थे, वरना इसके अपने लोगों ने इसको जलील किया है। इवन चले इसके चैनल को छोड़ दें हम लोग, आप अगर मॉडर्न डे डिबेट्स में जाएंगे ना, वहां पर तो न्यूट्रल लोग होंगे, इसके चैनल पे तो इसके अपने लोग मॉडर्न डे डिबेट के ऊपर लोग इसको जलील कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में थी तो इंग्लिश ऑडियंस भी जुड़ी हुई थी। अब जिनको इसका नहीं पता था, इसके कैलिबर का नहीं पता था, वो यकीन कर इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे हम लोग मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है, हम चाहे एथियस्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन ये किस बंदे को आपने लाके सामने बिठा दिया है। ये मॉडर्न डे डिबेट्स के चैनल पे ये कमेंट्स आ रहे हैं। और उसके बाद डैनियल हकीकतजू के चैनल के ऊपर मैंने जाके देखे तो इसी तरीके से वहाँ पे एथियस्ट या क्रिश्चियंस या हिंदूज तो आपके सामने ये तो मैसेज कर ही रहे हैं, वो भी कमेंट्स करके इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये किस बंदे किस कैलिपर के बंदे को लाके बिठा दिया। और जो कह रहा है कि जी सर्जरी हो गई और हम लोगों ने मार्स पे भेज दिया, मतलब just you did not Google it, sir. Am I right, sir? You did not Google. Yes, yes. Yeah, I didn't Okay. Google it. And the second thing, हाँ आगे बढ़ें जी। अच्छा, मतलब अब मैं ना श्योर मतलब जी 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 मतलब श्योर जी। अब मैं आपको सुनाता हूँ पिछवाड़े और तेरी ऑडियंस, पैदा होकर भी आ जाओ ना, इस बात का जवाब नहीं दे पाया था तू। इसने डिफेंस किया था ब्रह्मा के, यानी बेटी ठोक भगवान को इसने डिफेंड किया, ये कहकर कि ये जनाब एक पर्सोनिफिकेशन थी, एक एक एक्सप्रेशन था कि नेचर कॉन्शियस के साथ कैसे रोमांस होता है उनका, ये पर्सोनिफिकेशन हुई है। क्या कहा था जरा सुने। और डैनियल ने जिस तरीके से इसको पांजा फिट किया है, उसके बाद दूसरी बार ये इस इशू के ऊपर बोला भी नहीं था। जरा सुन ले पहले डैनियल हकीकतजू की माशाल्लाह जबरदस्त जो उसने बात की, ये मैं आपको सुना रहा हूं। ये चेक करें, पहले डिफेंस सुने इसका पिछवाड़े का डिफेंस सुने। ब्रह्मा बेटी ठोक ने क्या बात की, जरा क्या था वो असल इशू जो ये बड़ा बोलता फिरता है, ठीक है ना, सुने। Union between consciousness and the unconscious nature, material. It clearly explains to you all, and every Hindu knows it. Every Hindu knows it, ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। Every Hindu knows this interpretation कि ब्रह्मा ने बेटी को नहीं ठोका था, बल्कि ये कॉन्शियसनेस का और अनकॉन्शियस नेचर का आपस में मिलाप था। And to just to reinforce my statement, let us go to the fifth adhyaya of the same Purana. It clearly says that before Daksha there was इतना बड़ा ब्लंडर मारेगा ना, इतना बड़ा ब्लंडर। No sexual reproduction. कहता है कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कोई सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं था। जब सेक्सुअल ऑर्गन ही नहीं है तो सेक्स कैसे हो सकता था, ये था इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको याद रखना आपने जी। After Daksha is what we consider the first organism to have sexual intercourse to produce their offsprings. Matsya Purana, chapter 5, shloka 2, 3, and 4. Check it out in all your English translations that you have. ठीक है जी। क्या पेश किया इसने, जस्टिफिकेशन क्या दी कि सिंस कोई सेक्सुअल ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करता था, सेक्स हो ही नहीं सकता था, लिहाजा ये कहना कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी को ठोका था यानी कि सेक्स किया था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ठोकना, मैंने नहीं बोलना था, ये मैंने को अच्छा वर्ड यूज करना था।
मगर क्योंकि इसने बार बार एफ वर्ड यूज किया था, अब भुगत, वरना नहीं मैंने बोलना था। अगर तू इंसान के पुत्र की तरह एकेडमिक डिबेट करता, कुछ करके दिखाता, तो तेरी इज्जत भी मेरे दिल। मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं उस दुश्मन की भी इज्जत करूंगा जिस दुश्मन के अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिसके अंदर गैरत हो। अच्छा, क्या रखा जी इसने? दो चीजें। नंबर 1, जो ब्रह्मा और उसकी बेटी के बीच में हुआ था वो सेक्स नहीं था, क्योंकि सेक्स उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअलिटी जो है वो सामने आना शुरू हुई। ये बात रखी है उसने। पॉइंट समझ आ गया? धजियां, धजियां कौन उड़ाएगा जी? डैनियल। सुने जरा, डैनियल इसके ऊपर धजियां उड़ाता है। ये that I read from Skanda Purana, or I referenced it. So let's read this, because he gave a kind of apologetic explanation that no, this is prior to sex even existing. But then why does the Skanda Purana say very clearly that he desired like a lover of his own daughter? गौर से सुने, फोकस करके सुने। जिन लोगों को समझ आ जाएगी गौर से सुने कि डैनियल जो है जड़ से उखाड़ के इसके आर्गुमेंट को फेंकने लगा। ये हल्के ले रहे थे, डैनियल को ले रहे थे लाइट। हाँ सुनो जरा। Explanation that no, this is prior to sex even existing. But then why does the Skanda Purana say very clearly that he desired like a lover of his own daughter? आगे। Okay, so what does that mean? Inclined. So let's read the whole thing. This daughter of Prajapati, meaning Brahma, became ashamed on noticing her father's lecherous love for her. Hence, she assumed the form of Rohita deer. Inclined to have sexual dalliance with her, Brahma too took the form of a deer. As she went ahead in the guise of a female deer, he too followed her. On seeing him intent on having sexual intercourse with his daughter, all the deities condemned him. This Brahma is committing a deed that should not be done, i.e. attempt to have sexual union with one's own daughter. So दोबारा सुने, इतनी सी जुमला। Not be done, i.e. attempt intercourse with his daughter. All the deities condemned him. This Brahma is committing a deed that should not be done, i.e. attempt to have sexual union with one's own daughter. So if you have like some kind of different interpretation of this, and all the words here are not really about sex, then why are they condemning him? Why is he being condemned? So what is it that he's actually doing that deserves being condemned in the Skanda Purana? जबरदस्त, सुपर्ब ब्रदर डैनियल, सुपर्ब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रदर डैनियल कहते हैं, मैं उर्दू और हिंदी वालों को समझा देता हूं जिनको नहीं समझ आई, अगर इन केस। पिछवाड़ा कहता है कि इट वॉज सो प्योर पर्सोनिफिकेशन, नेचर वॉज सो प्योर एंड सो शुद्ध एंड पवित्र है। और सदगुरु की झांट के घिरे हुए बाल जब नहीं धर्म का कुछ कर सकता तो क्यों उंगली लेने आते हो? हैं? अब सुनो दोबारा। डैनियल कहता है कि अगर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मान ली जाए कि ये कोई मिस्टिक किस्म की एक्सप्लेनेशन थी, कोई स्पिरिचुअल किस्म का कोई जर्नी था, कोई जबरदस्त किस्म का कोई कनेक्शन था नेचर और कॉन्शियसनेस के अंदर, हैं? नेचर और कॉन्शियसनेस के अंदर एक बड़ा पवित्र संबंध था, तो ब्रह्मा को इस काम के लिए कंडेम क्यों किया जाता है? हाँ जी, ब्रह्मा को इस काम के लिए कंडेम क्यों किया गया? तमाम देवी देवताओं ने क्यों कंडेम किया? एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, देयर इज नॉट अ yes, single, but they don't worship Brahma. Even in that only one temple of Brahma in India, there is not a single temple in the whole India, temple of Brahma, where he is worshipped by his bhakts. Why? Why? Just Google it, sir.
Just Google it, sir. Why? Just Google it, sir. Yes. ब्रह्मा को कंडेम किया ही इसलिए जाता है कि वो बेटी ठोक था, उसने बेटी के साथ झिंगा लला हुर्र किया था रात के 3 बजे जी। इसीलिए ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि इसने जितनी भी कलाबाजियां मारी, किसी एक चीज का जवाब ये नहीं दे पाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मैं कुछ और चीजें सुनाना चाहता हूं जिसको आप जरा देख लें। किधर गई है? हाँ, 1 मिनट मैं देख लूं जो कुछ चीजें हैं, फिर मैं आपको एक व्यू करना चाहता हूं स्टार्ट का और लास्ट का। ओह क्या कहने, क्या कहने, क्या ही कहने। लेडीज एंड जेंटलमैन, the one and only Sam Stallone. अहलन व सहलन जनाब, जनाब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक भाई। मजा आया कि नहीं? पैसे वापस पूरे हुए कि नहीं? अभी पैसे लौटाने ही आया हूँ मेरे भाई। ऐसे बैठ के खाली बस चस लेने का मजा नहीं आ रहा था, कुछ पैसे ऐसे लुटाए, चिल्लर फेंके, नोटों की बारिश हो, सब मजा आएगा, इसीलिए आया हूँ कुछ लौटाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो खटिया खड़ी कर दी इसकी। मैंने क्या वर्सेस करनी है? रियलिटी, मैंने क्या करनी है? रियलिटी। ये अच्छा, हाँ हाँ, पूल, यस, ये बिल्कुल हकीकत, ये बिल्कुल हकीकत है। ये करना अपना रिव्यू देने से बेहतर ये सनातनियों के मुंह से रिव्यू ये बेहतर है। यस, दैट्स ट्रू। इसीलिए सैम भाई मैं ये चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये आपसे भागा हुआ बंदा, और ईमेल जो जारी बात है पर बाद में लीक हुई, पब्लिक हुई ईमेल, जिनमें पता चला कि ये आपसे भीख मांग रहा था कि जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जनाब, मुझे ईमेल कर दो। हाँ जी, भीख मांग रहा था। आप क्या फील करते हो? यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग सैम भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एज अ डिबेटर और हिंदुइज्म के रिसर्च के तौर पर, या बीइंग अ स्टूडेंट, यू आर हम्बल, आई नो दैट, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, आप डिसअपॉइंटेड हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पिछवाड़ा ने कुछ मेहनत की, ठीक किया? आप कैसे देख रहे हो, अगर ये गलती से आप उस फ्रेम में होते तो? तौबा 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 मेरे भाई, तौबा तौबा। ये डिबेट, ये तो मैं डिबेट ढूंढ रहा था, किधर है ये डिबेट? कहीं कहीं नजर तो आ जाए, अगर कोई शख्स है ऐसा डिबेट नाम का तो कहीं दिख जाए मुझे इसमें। तौबा 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 तौबा, इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं हुआ भाई। ये डिबेट होती है यार, इस तरह से डिबेट, वो भी भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो हमसे कर लेता चलता। इस तरह की गिरी हुई डिबेट, टुच्ची डिबेट, अगर ये कोई इंडियन से कर लेता वो चलता था, पर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर सनातन धर्म को रगड़ के रख दिया है खुद ही। डैनियल भाई को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद अपने हाथों से सनातन धर्म की चिता सजा कर आया है, खुद ही। और ये ऐसा नहीं कि ये सनातन धर्म को वहां डिफेंड करने गया था या सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, ये खुद के लिए गया था कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार नजर आ जाऊं, अपनी बढ़त के लिए, अपना सीना चौड़ा करने के लिए कि भाई हाँ मैं भी वहां पर गया हूं। सनातन धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर इसका लेना देना होता था तो ये पहले हमारे से एक्सेप्ट करता था हमारी डिबेट। सनातन डिबेटर जब बनते हैं ना, ये डिबेटर तो कौन से कॉर्नर से डिबेटर है भाई? है इसको सिवाय गाली देने के, मॉक करने के, जलील करने के, इसके अलावा कुछ नहीं आता है इसको डिबेट का डी नहीं पता है। इसको डिबेट के डी का नहीं पता। इसको विटामिन डी का जरूर पता है इसे। प्लीज कंटिन्यू रखिए मेरे भाई आप। हाँ, नहीं मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा यानी एक्साइटेड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, वार्म वेलकम। आपको लोग बड़ा याद करते हैं, कल भी बड़ा याद कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर दानियल ने भी जिक्र किया, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सैम भाई के
एक तो यह है कि डिबेट तो नजर ही नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि आप किसी से डिबेट कर रहे हो या एक रैंडम कॉलर। मेरे ख्याल से सैम भाई आपने लाइव स्ट्रीम्स की हुई हैं यार, इतनी इतनी हैवी किस्म की डिबेट्स आपकी चली हैं, लाइव सेशंस चलते रहे हैं, पूरी सीरीज आप लेकर चले, ठीक है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, आपकी सीरीज चली प्रॉपर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यानी ऐसे नहीं लग रहा था कोई रैंडम कॉलर कोई इससे बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, मोक्ष जैसे परफॉर्म इससे बेहतर कर लेता है, या और कई लोग हैं? एग्जैक्टली और राठौर जो है, राठौर एग्जैक्टली मैं मोक्ष को बोला भी हूँ, पर्सनली बोला हूँ कि मैं आप लाख गुना बेहतर है हीटेड डिबेट से। ये मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग, और मोक्ष कभी भी आएगा ये वर्ड पूछ लेना और मोक्ष इसकी गवाही देगा कि हाँ सैम भाई ने ये बोला है। और मोक्ष खुद आगे से एक्सेप्ट करा है कि हीटेड डिबेट लायक नहीं है डिबेट करने के, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, नो डाउट। हमारे यहाँ कई इंटरेक्शंस हुए हैं सनातनी कॉलर्स के साथ, तो मुझे बड़े बड़े फाइन किस्म के, बड़े प्यारे प्यारे किस्म के लोग मिले हैं जिनके पास बड़ी बेसिक फिलोसफी का भी नॉलेज होता है, वो ठीक से उन्होंने शास्त्रों का ध्यान भी किया होता है। मगर यहाँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि यानी एक साइट पकड़ी हुई है, इस्लामोफोबिक साइट पकड़ी है। अच्छा, डॉन को कह रहा है चेक करो जरा, यानी मैं इस चीज पे हैरान था कि अपना तो पता ही कोई नहीं है, दूसरों में भी उंगली घुसेड़ रहा है। अब एक वाकया, वो आर्टिकल उठाया डॉन न्यूज का, और डॉन कंट्रोवर्शियल न्यूज़पेपर है, उसको कह रहा है जी वेरी एस्टेब्लिश न्यूज, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलता है। डॉन न्यूज जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, इसीलिए तो आई थी ना, डॉन लीक्स आई थी, वो किसी वजह से ही आई थी जी। तो ये को नजर नहीं रखते कुछ भी। अच्छा, फिर इसने वाकया उठाया पाकिस्तानी टिकटॉकर का, बेवकूफ इंसान, मुझे इसकी समझ नहीं आई। वो पाकिस्तानी टिकटॉकर को, वो आयशा जो लड़की थी, उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इकरार और यासिर शाह, उन्होंने बाद में माफी मांगी है कौम से। उन्होंने कहा हम गलत बंदी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके पाकिस्तानी टिकटॉकर के साथ जो बंदा था रैम्बो, उसने बाद में उसी के खिलाफ गवाही दी। और फिर पता है वो पाकिस्तानी टिकटॉकर को कोर्ट बुलाती रही है, उन्होंने उसके खिलाफ वारंट जारी किए कि इसको अरेस्ट करो, ये आ क्यों नहीं रही, क्योंकि वो पाकिस्तानी टिकटॉकर बाद में उन लोगों से जिनको अरेस्ट किया हुआ था 5-5 लाख आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मांग रही थी। इसकी न्यूज है, उल्लू के पत्थर पाकिस्तानी टिकटॉकर। अच्छा, तो क्या कहता है, इसके जुमले सुनना जरा। मुझे इतना, मैं कहता हूं इस्लामोफोबिक भी इंसान ना हो कि पागल मत मारी जाए। पता है क्या इसने जुमले बोले हैं? कहता है उसके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था, जबकि वो टिकटॉकर जो है, वो टिकटॉकर आने से पहले अपने फॉलोअर्स को बोलकर आई थी मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं उस मीनार पाकिस्तान में, ठीक है, 14 अगस्त के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां पे गार्ड मौजूद था, सिक्योरिटी गार्ड मीनार पाकिस्तान के अंदर, जो उस वक्त जो उसकी जिसकी ड्यूटी थी, वो गार्ड बताता है कि इसको 2 बार हमने बचा के बाहर निकाला है। जब लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, 100-150 लोग इकट्ठे हुए हैं इसके पीछे, तो हमने इसको निकाला है, ये फिर वापस आई है। वो बंदा बोलता है वो फिर वापस आई है। ये जरा सुनिएगा इस बंदे ने क्या जुमले बोले हैं, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। Let me show you some instances. You must remember that a TikToker girl in Pakistan who was celebrating their Independence Day on Minare Pakistan, and he was molested by. He was, ठीक है, हाँ वो शक पड़ जाता है ना, विष्णु और मोहिनी, वो कंफ्यूजन होती है ना जी। अच्छा जी। Whole crowd. Her clothes were torn because she was roaming there without hijab. चेक करें सैम भाई, because she was roaming there without hijab। दोबारा सुने, झूठा मक्कार आदमी, दोबारा सुने जुमला। Molested by the whole crowd. Her clothes were torn because she was roaming there without hijab. यार ये को बात है करने वाली, ये केस है पूरा। इकरारुल हसन ने लोगों से माफी मांगी, बाद में आकर कहा, बाद में जो केस निकला, क्योंकि डीप डाउन जब आप विटनेसेस सामने आया तो उन्होंने बताया कि ये लड़की गई, फिर वहां आई, ये गंदे इशारे कर रही थी। जो विटनेस वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वहां पर आकर ये क्या करती थी टिकटॉकर, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर गंदे गंदी हरकतें करनी और ये सारी चीजें करनी। तो जो लोग दिमागों के अंदर तुम्हारे साथ रेप कर चुके होते हैं, जब तुम उनको मिलती हो रोडों के ऊपर, तो वो और क्या करेंगे, आरती उतारेंगे क्या, तेरी आरती उतारेंगे। वैसे भी ये इरेलेवेंट है भाई, टॉपिक से है ही नहीं, ये कुछ कनेक्शन इसका। अगर ऐसा देखा गया तो 100 केसेस है इंडिया में। मणिपुर की क्या किस्से है, लड़कियों को नंगे परेड करवाए है बीजेपी के मेंबर्स, हिंदुत्व नंगे परेड कराए, बहुत सारे केसेस है। यस सॉरी, होल्ड ऑन अ सेकंड, वी हैव हियर द विनर, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रदर दानियाल, welcome on stage. This is very first time, mashallah, on Awaaz-e Haq. Brother Daniel, welcome you in Awaaz-e Haq style. Ahlan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan, Walaikum ahlan, assalam ahlan. warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Alhamdulillah, we are Alhamdulillah. good. How Good, about the alhamdulillah. beef? Did you enjoy it? Yeah, it's very tasty, alhamdulillah. Yeah, Yeah. alhamdulillah. So yes, brother Sam, mashallah. would you like to talk something about debate with brother Daniel? Alhamdulillah, we welcome you, and we alhamdulillah, we were giving so much alhamdulillah prayers for you, and we wish you alhamdulillah the best. You performed very well, alhamdulillah, outstanding. And since we know alhamdulillah you were debating since long time with the liberals or atheists and modernists and secular or even feminist, but alhamdulillah this was your first time. I think so. It was your first time with the Hindu apologist, right? Yeah. First formal debate with Hindu, yeah. Alhamdulillah. How was the experience, by the way? Yeah, the experience, first of all, Jazakallah khairan for all your help, yourself, Mufti Yasser, Sam also. I got a nice PDF with a lot of citations, mashallah. So the preparation, I had to learn a lot of new things because it's very different, the structure of Hinduism as a religion. It's not similar exactly to Christianity or Judaism. So I have experience debating against Christians and Jews against their religion and their religious books. And they have a different concept of revelation. They have a different concept. So that was a lot of new things there, but there's also many similarities between the reform movements within Christianity, Judaism, Hinduism, and even Islam, because we have Muslim reformers too, that they are trying to, for example, those who reject hadith. Hadith rejectors are very similar to the logic of some of these Hindu apologists, that they are rejecting the Smriti texts, for example, Smriti texts and the Puranas, they reject them. It's same kind of mentality. You're trying to get rid of the things that are contrary to the liberal Western norms. So you think that the best way to do that is just to eliminate texts. So you have Muslims, some Muslims, unfortunately, they try to do this as well. But the preparation, alhamdulillah, was much easier thanks to your assistance and your expertise, mashallah, and experience. So barakallahu feekum, thank you so much. And I showed, some of their material in the presentation, of course, and Sam's material as well. So he had no response. I was very surprised by this. I was surprised that I had prepared more, actually, like more slides, more information. That's what I was. Yeah. I was thinking that literally you were waiting that at least put some strong objections or allegations. At least you were waiting. I can see your face. Alhamdulillah. Yeah, we were looking. Remember how much we talked about halala and niyog? Remember how much? Exactly. He didn't even bring that up. I was preparing for him to maybe bring up some hadith on some other issues, but he didn't even get to that. So I think he recognized, and his followers recognized, that it was a failure on his part not to address these issues. They not just recognize it. They are, they are cursing him. I have just shown. There are tons of messages I have just shown from his members. They super chatted, and they're like, abusing him. Literally, they were abusing him. Yeah. So and actually, alhamdulillah, brother, Daniel, brother, you were actually very sweet in the debate. Like you haven't shown that main references we all were waiting for. There were so many references you had, like the Brahm Rakshas or any other Sanatani would have never heard in their life. You had so many references, but you haven't shown one of them. On the basic points only you defeated him, mashallah. He couldn't answer the basic points of Sanatan Dharam. And you have grabbed him with his collar, with his neck, while having chilling and having a cool debate on the side beef, and other side Brahm Rakshas, and other side the supporters. Alhamdulillah, it was very, very, very enjoyable moment you had, and we all had, seeing your debate, and the very chill moment you had with the Brahm Rakshas, having a cool discussion.
and Yeah. just like one-sided, it was just one-sided knockout defeat. Alhamdulillah. He couldn't answer. Brother Sam, Alhamdulillah. Brother Sam, I was thinking that how can a Rakshas be scared of, yani so scared of a beef? You know, Rakshas, Rakshas, Alhamdulillah, he they was. themselves eat Yeah, beef. yeah. Actually, he was scared of a Muslim, a believer, like Alhamdulillah. Umar Raziallahu Ta'ala anhu. The millions of Alhamdulillah. Brahm Rakshas and the fathers of Brahm Rakshas run away when the name Umar comes. The Alhamdulillah. personification of Umar, the personification of a Muslim comes in front of such Brahm Rakshas. They run towards their homes, their caves, their rat holes, and they never come out of that. Alhamdulillah. And Brother Daniel, let me tell you one thing. Since you don't know, you cannot understand Hindi. On their channel, they were literally there. They admitting that this is a big honor for them, just sitting in front of you. And one of them was just saying that, oh, whether you win or you lose, at least you are sitting there. You are just there. This is an honor for Hinduism, for whole Hinduism. Yeah. Yeah, this is the racism, you know. This is racist, and subhanallah, this is the blessing of Iman and Islam, and we don't have this racism, you know. There's no difference. Believer is a believer, Muslim is a Muslim. Doesn't matter the color or the background, but for them, they say, oh, you know, American. Maybe this is why they think, oh, it's an honor. No, actually, he was thinking that you're from London, you're from UK. Oh, yeah. That's why he was citing the stats from UK. I was laughing. Oh, yeah. I was wondering why he's citing the UK stats, but I live in America, bro. Yeah. And second thing is, Brother Daniel, they were saying, maybe next time we'll prepare someone, new and fluent in English and very well prepared. I was thinking in my mind, if next time one of you, get a chance to sit in front of Brother Daniel, you will see Brother Daniel will speak and quote references in Hindi, inshallah. Inshallah. So keep it in mind. Yeah, I have to learn. Inshallah, no problem. Alhamdulillah. He just That was came here great. for getting. He just came to you, approached you just for getting fame. He just want fame from you. If he had to debate, he would have debated me or Brother Amir in the first place. We have already offered him the live debate offer on his channel, and he ran away from debating me. He was too scared to debate me or Brother Amir. So he just headed towards the Western people who has a little low grip on Hinduism. So he has just targeted you. But Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, you have bashed him without even giving him a sip of water to drink. Yeah, alhamdulillah, it's we'll see. Like it was very difficult because I challenged because I posting things on my Twitter, and there are a lot of these Hindus who are attacking Hindu devotees that are attacking on the Twitter threads, and they're making big claims and saying I don't understand and I'm just ignorant. But then when I challenge them, okay, come and let's actually have a debate on these issues, then no one accepts the challenge. So I was very surprised actually when he accepted this heated debates, the challenge, and agreed. And I was shocked, especially on the topic of women. That's, such the weakest point probably that they can argue in Hinduism. So it was very surprising. I don't know if they will accept formal debates. I think they like to just keep it very low stakes on their channel, just random callers. They don't want to actually face any kind of expert. I'm not even an expert, imagine if they were debating, yourself, any of you would just wipe the floor with them. So imagine like just me, very low level of knowledge, this was the result. So subhanallah, that shows that they really, and it's not like, I think even if they had a very, like I prepared the debate expecting someone who is very educated, who's very, at the high level of debate of Hindu apologetics, maybe someone who has a PhD. That's the level that I prepared to be able to respond. But he didn't meet that, so that's why a lot of the material was not presented. A lot of the kind of argumentation. We didn't go into the philosophy of Vivekananda. We didn't go into the philosophy of these
Advaita Vedanta. We didn't go deeply into that because his whole strategy, and maybe this is particular to him and another Hindu would have had a different approach, but maybe he actually